हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। आप सबका मैं IQRA IAS के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। माई सेल्फ नीरज नचिकेता, आप सब मुझसे परिचित है। तो आज करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये दूसरी क्लास है एंड आई विल कीप दिस क्लास अगेन बाइलिंगुअल मोड। ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड राइट नाउ एज लाइव, एट द सेम टाइम दोज हु विल बी सीइंग दिस वीडियो आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, है ना, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उन दोनों के लिए आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आई एम गोइंग टू डिस्कस करंट एस्पेक्ट ऑन सिक्योरिटी पार्ट ऑफ इट। अभी जो पिछले 2-3 सालों में, साथ साथ में इस साल भी, जो ऐसे डिफेंस या न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो न्यूज में रहा है, आई एम गोइंग टू कवर दैट। सो अगेन लुकिंग इनटू द प्रीलिम्स एग्जाम, all these topics are very important. Previous session I have covered space science and technology and astronomy. Today I am going for the defense technology, right? So I am very glad to be here and discussing all these areas. तो कुछ चीजें हैं जो कि मैं एक एक करके विस्तार में बताता चला जाऊंगा and you can jot it down. If you're right now watching this video, you can jot it down the important points, right? And we'll see how the dimensions unfold for UPSC exam. इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड राइट नाउ। गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग प्रतीक्षा। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हियर। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गेट इनटू द टॉपिक्स। तो मैं शुरुआत करता हूं यहाँ पर। पहला ये चीज है, अभी ये ट्रेंडिंग न्यूज है, राइट? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही विजिटेड कलपक्कम, वेयर वी हैव एटॉमिक पावर स्टेशन। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में कलपक्कम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? प्राइम मिनिस्टर वाज हियर और इसका ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज रहा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, लेकिन इट वाज नॉट गिवन दैट मच ऑफ पब्लिसिटी इन द न्यूज एंड एवरीथिंग देयर। बट दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन सी इन द फोटोग्राफ, आप इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं दैट प्राइम मिनिस्टर राइट इज टॉकिंग टू द साइंटिस्ट, scientist explaining the entire aspect of it. Then you can see here the woman scientist again taking the tour of that Kalpakkam area of the prime minister and then discussing about that part of it. And this is the external view of the nuclear park, right? This news was with respect to loading of fuel in the core of prototype fast breeder reactor, FBR, fast breeder reactor. What was in the news? In the news here that Prime Minister's visit to Kalpakkam is a part of our nuclear power program, atomic energy program, right? Visit to Kalpakkam, and then here that was a loading of fuel to the core of, I'm highlighting the word, to the core of prototype fast breeder reactor. इस इवेंट के बाद मतलब रिएक्टर को स्टार्ट किया गया। दिस रिएक्टर हैज बीन स्टार्टेड। कुछ ही दिनों के बाद या महीने के बाद दिस रिएक्टर विल अटेन क्रिटिकलिटी। व्हाट इज द वर्ड हियर? क्रिटिकलिटी। दिस विल अटेन द क्रिटिकलिटी। This topic becomes very relevant for prelims exam because
from the nuclear science and technology perspective and also from the energy security point of view has a lot of importance. प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में जो अभी उसका कोर में जो फ्यूल को लोड किया गया और कुछ ही महीनों के बाद जब ये क्रिटिकल हो जाएगा, क्रिटिकलिटी अटेन करेगा, तो ये हमारे परमाणु ऊर्जा के द्वितीय चरण की शुरुआत है. इट इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम which is located Kalpakkam, which is in Tamil Nadu. Where is Kalpakkam located? That is in Tamil Nadu. Tamil Nadu में दो हमारे न्यूक्लियर पार्क्स हैं. One is Kudankulam, another one is Kalpakkam. And Kalpakkam becomes important because this particular place we have a new reactor called fast breeder reactor, तीव्र प्रजनन संयंत्र, यानी हिंदी में इसको कहते हैं, या तीव्र प्रजनन रिएक्टर. इसकी शुरुआत हुई है. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है ना, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, आर्किटेक्ट ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ द कंट्री. He chalked out 3 stages of nuclear power program. Given that India has limited uranium, but we have abundant thorium. भारत में यूरेनियम सीमित है, लेकिन हमारे पास थोरियम का भंडार है. लगभग 25% पूरे विश्व का थोरियम भारत में. और आपको पता है मोनाजाइट सैंड right, found in the beaches of Kerala, which contain this thorium here. So if you look at, we have limited uranium, but we have so much of thorium, right, which we can obtain from monazite sands, right, in the coastal areas of Kerala. हमारे पास इतना थोरियम है कि हम 250 वर्षों तक, 250 years, we can generate electricity by using thorium. Dr. Bhabha, he was a visionary. भाभा जो थे वो विजनरी थे. क्या सोच थी उनकी उस समय. अब सोचो कि 50 के दशक में है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जो थिंकिंग थी वो वे फॉरवर्ड था, मतलब बहुत आगे की सोच थी कि एक समय भारत जाकर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा जो थोरियम को उपयोग करेगा. अब हम उस दिशा में अग्रसर हैं और हम जल्दी ही थोरियम यूटिलाइजेशन में पहुंचेंगे. जो चीज हमारे जो एटॉमिक एनर्जी पावर स्टेशन प्रोग्राम का जो जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जो चीज की संकल्पना आज से 60-70 वर्ष पहले रख दी थी, जिसकी नींव अब धीरे धीरे वह हकीकत में बदल रहे हैं. And that is very very important for all of you to understand, right? आप सभी को इस बारे में जानना बहुत जरूरी है. कई बार होता है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अपने इतिहास होते हैं. हर चीज का इतिहास होता है, हर किसी का बैकग्राउंड होता है, और वो इतिहास जो है वही भविष्य का रास्ता पहले से तय करता है. तो आज हम दूसरे स्टेज में, हमारे एटॉमिक पावर स्टेशन का जो प्रोग्राम जो है, भारत का जो 3 स्टेजेस जो प्रोग्राम है, ये जो हमारा 3 स्टेज जो प्रोग्राम है, तो हम इस 3 स्टेजेस में स्टेज 1 प्रेजेंटली हमारा जो मोर देन 20 रिएक्टर्स आर ऑफ स्टेज 1. देन अभी स्टेज 2, दैट इज अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. तो अब हम 1 से 2 में जा चुके, राइट. और अब हम स्टेज 2 से ही स्टेज 3 में जाएंगे. स्टेज 2 का स्टार्ट होना स्टेज 3 के करीब ले जाना होगा. दैट विल टेक अस वेरी क्लोज टू 3rd स्टेज ऑफ आवर एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम. दैट मीन्स स्लोली वी विल मूव टुवर्ड्स थोरियम यूटिलाइजेशन. दिस इज फॉर thorium utilization.
अभी जो स्टेज 1 है हमारा, दैट इज द नेचुरल यूरेनियम. इट बेसिकली अंडरगोज फिशन ऑफ नेचुरल यूरेनियम. और नेचुरल यूरेनियम में दो पार्ट आता है. वन इज यूरेनियम का आइसोटोप है 235 और यहां पर यूरेनियम 238. 92 is atomic number of uranium, which is the total number of protons here. तो 235 238 का यूज होता है. स्टेज 1 जो हम रिएक्टर यूज करते हैं, we use pressurized water reactor. What we use here? Pressurized heavy water reactor, PHWR. These are our indigenous build reactor, where heavy water, deuterium oxide, is used as a moderator and as well as coolant. Moderation का भी काम आता है. What is moderator? Slow down the neutron. यूरेनियम को ब्रेक करने के लिए स्लो न्यूट्रॉन चाहिए. So that slowing down neutron, we use moderator. Deuterium oxide, heavier form of water, heavy water, which moderate the reaction plus keep the core of the reactor cool, absorb the heat, power generation. This is our stage 1. We have more than 20 such reactors. Trombe, Tarapur, Kudankulam, Kalpakkam, Rawat Bhata, Kaiga, Narora, Kakrapar. जहां जहां हमारे न्यूक्लियर पार्क्स हैं वहां पर हम यहां लगभग स्टेज 1 में. अब शुरुआत हो रही है स्टेज 2 की. नाउ वी आर मूविंग टू स्टेज 2. तो स्टेज 2 का जो है यहां पर दिस यूरेनियम which does not undergo fission with slow neutron. जो यूरेनियम 238 धीमी गति के न्यूट्रॉन कण से है ना विखंडित नहीं होता है, और उसका हम यूज जो है, उसका हम उपयोग कहां कर सकते हैं? ब्रीडर रिएक्टर. कहां कर सकते हैं? ब्रीडर रिएक्टर में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, FBR में. तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर breed, generate, produce fissionable material from non-fissile material. यूरेनियम 238 फर्टाइल है लेकिन फिजनेबल नहीं है, यानी कि विखंडित नहीं होता है. किससे विखंडित नहीं होता है? किससे फिजन नहीं होता है? स्लो न्यूट्रॉन से, राइट. बट इफ वी कन्वर्ट यूरेनियम 238 into plutonium, so we can break the plutonium fission and generate electricity. So that is stage 2. तो ये जो breeder reactor है, this is here where we have this one breeder reactor, PFBR. Now what it does here, this uranium 238 is converted into plutonium 239 with a fast neutron, not slow neutron, fast neutron. सेकेंड स्टेज का जो अभी न्यूज में है, वेयर प्राइम मिनिस्टर राइट वेंट टू द कलपक्कम एंड स्टार्टेड दिस रिएक्टर. दिस बेसिकली ब्रीड, जनरेट, प्रोड्यूस प्लूटोनियम एज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम यूरेनियम 238, which is more abundant and which we not use so much into first type of reactor PHWR in the stage 1. यहां पर ये चीज है. और अभी जस्ट मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हमें थोरियम की ओर जाना है, हमें थोरियम की ओर यूज करना है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर. अब यहां बात ध्यान रखना है, जितने लोग अभी आप लाइव देख रहे हो, आपके मैं डाउट्स लूंगा, मैं आई टेक योर डाउट्स. ठीक है, मैं आपका सबका चैट बॉक्स देख रहा हूं. ये मेरे सामने लैपटॉप है, लैपटॉप में आपके सारे चैट ओपन है ना. बहुत लोग अभी ज्वाइन भी किए, मैं सबको देख रहा हूं, सबका यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं. ठीक है, मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा. आई विल जस्ट वेरी सून इंटरेक्ट दैट. लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक फर्स्ट. थोरियम को यूज करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है रिएक्टर, थोरियम बेस्ड रिएक्टर, दैट टेक्नोलॉजी. और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करना होगा. वी हैव टू कन्वर्ट थोरियम इनटू यूरेनियम और मिक्स थोरियम विद यूरेनियम.
और विथ प्लूटोनियम टू कैरी आउट फिजन। कहने का मतलब है अगर हमें थोरियम को यूज करना है तो पहली बात तो क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम मोनाजाइट सैंड से थोरियम को निकालें। थोरियम का हमारा रिएक्टर होना चाहिए पावर जनरेशन के लिए। और दूसरी बहुत अहम बात क्या है कि थोरियम अपने आप में फिजन नहीं होता है, जैसे यूरेनियम 238 अपने आप में फिजन जल्दी नहीं होता है, तो हमें यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम बनाना पड़ता है। उसी प्रकार थोरियम को भी हमें यूरेनियम में कन्वर्ट करना होगा या यूरेनियम या प्लूटोनियम के साथ मिक्स करके यूज करना होगा। FBR फास्ट ब्रेडर रिएक्टर इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो रिएक्टर है, दिस रिएक्टर है ना, फास्ट ब्रेडर रिएक्टर जो है, इसका दूसरा क्या महत्व है, व्हाट इज सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्टर, कि ये थोरियम को कन्वर्ट करता है यूरेनियम 233। सेम FBR फास्ट ब्रेडर रिएक्टर कैन कन्वर्ट थोरियम into uranium 233। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम माइनिंग करते हैं यूरेनियम का, तो प्रकृति में, नेचर में यूरेनियम का दो फॉर्म होता है, आइसोटोप जो कहते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एक है 235 और दूसरा है 238, जो हम यहां यूज कर रहे हैं, दो स्टेजेस। लेकिन जो मैं बात अभी रखना चाह रहा हूं, यूरेनियम 233 जो आप ये रिएक्शन देख रहे हो कि थोरियम को हम फास्ट न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करके FBR में, फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में कन्वर्ट करें यूरेनियम 233 में। तो यूरेनियम 233 इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। इसको हम ब्रीडर रिएक्टर में बनाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, नेचर में नहीं होता है, इज नॉट इन द नेचर। जब माइनिंग करते हैं वहां पर नहीं है। यूरेनियम 233 को हम ब्रीड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इस रिएक्टर में FBR, और वही यूरेनियम 233 हमारा काम आएगा थर्ड स्टेज में। विच स्टेज में? थर्ड स्टेज, जहां हम थोरियम को यूज करने वाले। सो दिस यूरेनियम 233 वी कैन यूज इन द थर्ड स्टेज। उसके लिए बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क हैज बिल्ट एन एक्सपेरिमेंटल AHWR एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जो कि तीसरे चरण के लिए। उसको वहां थोरियम को यूज करने के लिए हमें यूरेनियम बनाना पड़ेगा, यूरेनियम 233। और वो किसके थ्रू हो सकता है? FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो प्रधानमंत्री के कल्पक्कम में जाना और ये चीज करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसको एक और पॉइंट में समझाता हूं। ये जो प्रोटोटाइप है, ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो न्यूज में आया है, इस पे ऑलरेडी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, बट प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है ना। तो इसका क्या चीज ध्यान रखना है? पहला तो ये है कि ये यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम बना के कहां आएगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम फिजन कराएंगे। दूसरा यहां पर क्या है? दूसरा है कि हम थोरियम को कन्वर्ट करेंगे यूरेनियम 233, ठीक है, और वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, विल प्रोड्यूस द पावर, विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर। अब जो है तीसरा बात, गौर से समझना है। अब जो तीसरी बात जो सामने आ रही है, अभी आज ही मैंने एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट मैंने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट था। वो उस पोस्ट में ये बात किया जा रहा है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान अगले न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है? राइट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इंडिया गोइंग टू कंडक्ट पोखरण थर्ड, पोखरण नंबर थर्ड? आप सबको पता है कि भारत ने परमाणु हथियार, एटॉमिक वेपन, सबसे पहला हमने कब किया था? पोखरण 1 1974 में। दूसरा हमने किया था 1998 में पोखरण सेकंड, वेयर वी आल्सो डिड द टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स। अब एक अटकल लगाया गया
प्रधानमंत्री के कलपक्कम जाने में एक अटकल लगना चालू हो गया, एक अंदाज लगाना चालू हो गया कि क्या भारत तीसरे पोखरण का तैयारी पे है? इज दैट इंडिया प्लानिंग फॉर थर्ड न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग? तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा वो जब मैंने पढ़ा। और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान, हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है, कि क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग करने जा रहा है? इसीलिए भारत भी इसके लिए तैयारी कर रहा है, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो है अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है और भारत उसकी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी में लगा हुआ है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो भारत भी पोखरण 3 करेगा, पोखरण 3 भारत करेगा, है ना? अब ये क्यों कयास लगाने लगे? नाउ द थिंग इज दैट ये बात मीडिया में या ऐसे आर्टिकल में क्यों आ रहा है? Why the experts are writing such kind of article? That is that India preparing for the third Pokhran, or maybe that India and Pakistan both will conduct in future nuclear weapon testing. That kind of thing has happened because of this reactor. This reactor, FBR, fast breeder reactor, is so important. That even this plutonium, right? This plutonium, we can take this plutonium out of this reactor and make bomb. We can make a atomic bomb. तो प्रधानमंत्री के कलपक्कम में जाना और इस फास्ट ब्रेडर रिएक्टर को स्टार्ट करना, क्या ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में भारत ये प्लूटोनियम को बनाकर फास्ट ब्रेडर रिएक्टर से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी पे लगा हुआ है? राइट? क्या लगता है आपको, क्या ये हो सकता है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आप क्या कहते हो? राइट? तो मैं आपके चैट बॉक्स देख रहा हूं मैं, राइट? सो गुड इवनिंग एवरीवन, जितने लोग हैं पर, हाँ, आई एम गुड, मैं ठीक हूं, आप सब लोग भी ठीक है यहाँ पर? तो मैं सभी का भी चैट बॉक्स मैसेजेस में भी पढ़ लेता हूँ, जितने लोग अभी ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर जो है, राइट? सो आई एम सीइंग ऑल योर मैसेज हियर. So Harshit is there, Anurag, Pultos is there, Kanha, then Raja is there, Shivaraj is there, Sai Lokesh is there, Hemant is there. Okay, my question that what I have asked right now, what is your opinion on that? Is that India going to have Pokhran 3rd? Is that possibility of Pokhran 3rd? Fast breeder reactor, this FBR, can this point towards that kind of direction? I'm looking at your chat box, so I'm just saying that. So Madan Mohan also has joined. Yeah, Shubhankar Agnihotri, yes, good evening. Jai Hind, Rakesh. Rakesh ji, Jai Hind, okay. Okay, Shivraj is saying, yes, it is possible. Right? Right, it is possible. Shivraj is saying that it might be possible. That article which talk about that, maybe this may be a kind of a direction, on that direction may be possible there, right? Mother Mohan is also saying maybe it's possible, right? I'm seeing all your chat box. In chat messages, I'm just reading the message from my laptop right now. Yes, Sanket is saying yes, it can also be possible. Okay, good. So I'm very, very glad to see you all after a long time. Right? तो मुझे आपसे इंटरेक्ट करके अच्छा लग रहा है. राकेश यादव जी ने कहना है कि आपसे पढ़ के, ओके, थैंक यू राकेश जी फॉर ऑल योर प्रेज, आपके, है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
और पंकज सिंह का कह रहे हैं कि इफ यू सी करंट डेवलपमेंट लाइक अग्नि 5, ओके आई विल बी कमिंग टू दैट, अभी मैं आने वाला हूँ, आई एम जस्ट कमिंग टू द अग्नि 5 ऑल्सो, तो इसलिए मैं अभी जल्दी उस पॉइंट पे नहीं आ रहा हूँ। पंकज थाम के बैठो, अभी हम लोग अगले टॉपिक पे, धमाकेदार टॉपिक पे आने वाले हैं, राइट? ओके, सो यस, so what is saying that all of you thinking that it might be possible, that may be a possible, that maybe intelligent input is there, right? And that could be one of the indication there, right? और इलेक्शन ईयर इज ऑल्सो नियर बाई, चुनावी साल है ना, इलेक्शन होने वाला है। अगर आपको याद हो लास्ट इलेक्शन के टाइम में मिशन शक्ति हमने किया था, जब पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2019, दैट टाइम द इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, in general election time, that time India conducted DRDO carried out this particular test. हमने एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट किया था। DRDO developed the A-side weapon and a small satellite built by ISRO we destroyed the small satellite in the space. ये कब की बात है? 2019 है। Now we are in 2024, 5 साल बीत गए। हो सकता है कि इस बार फिर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला हो, राइट? इलेक्शन से पहले दिस कुड बी अ बिग काइंड ऑफ थिंग देयर, मैसेज टू द वर्ल्ड, तो माइट बी पॉसिबल। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पाकिस्तान, अभी इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले हो सकता है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू कंडक्ट दिस न्यूक्लियर टेस्ट, और भारत भी इसके लिए तैयारी में है कि ठीक है, अगर आप करोगे तो हम भी करेंगे, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मे बी पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल देयर। कई बार जो एक्सपर्ट के जो ओपिनियंस होते हैं, दैट माइट बी पॉसिबल देयर, राइट? तो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री का कल्पक्कम में जाना, प्राइम मिनिस्टर विजिट टू कल्पक्कम, see whatever prime minister does, it has some kind of message, it might be some kind of message there. One message that India is committed for nuclear power program, we want to develop our nuclear energy program to the next level, right? For our energy security, for more electricity demand, we want to go to the next level, right? That is one message may be there. Second message would be for security reason, right? Strategic and security reason, that could also be indication there, right? So that might be possible. You all are there. Geopolitical thing, yes Ritik, you are very correct. If the possibility of testing in the current geopolitical scenario, yeah, it can be possible, right? It might be a possible kind of thing. That's what this has become a really very important from examination point of view. But again remember that if UPSC asks the question, you have to go back to the basics. जब क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा तो वहां बेसिक चीजें भी पता होना चाहिए। करंट का तो चीजें उसको लिंक करना है स्टैटिक एरिया के साथ, बेसिक एरिया के साथ लिंक करना है। दैट इज ऑलवेज यू शुड कीप इन माइंड। ऑलराइट, सो आई एम very glad that you all are able to answer there. So now look at here this one, power of a nucleus, right? Power of a nucleus, a tiny nucleus which you cannot see with naked eyes, but it has a tremendous energy. That very tiny nucleus holds huge energy, right? So what you see right now, this is where you have the nucleus of an atom, and you know that any atom nucleus made of protons and neutrons. Electrons are outside in the orbit, and nowadays whatever power generation we talk about, that is based on fission, right? We are talking about fission based power. So now here the word comes here, what you see here, criticality. What comes here? The word here, criticality. Criticality. Now what do you mean by criticality here? If you look at this diagram here,
criticality of a nuclear reactor. Attainment of criticality of a nuclear reactor, it means that once the nuclear fission starts, so you know that uranium here, uranium which is bombarded with neutron, right? It splits into barium plus krypton. It also generates 3 neutrons. These neutrons are fast. Now these 3 neutrons brings about, again it strikes the uranium, and again in the process 3 neutrons are generated. Again it will strike the 3 uranium. So this chain reaction continues. When we don't control the chain reaction, so much of energy will be generated that it will become like an atom bomb or nuclear weapons. So this is what called as a chain reaction. Once a uranium strike with slow neutron, after that it produces more neutrons, and these neutrons when slowed down will again strike other uranium nuclei and again generate more number of neutrons, again more number of neutrons, again more number of neutrons. It becomes like a chain reaction. अगर हम इसको कंट्रोल ना करें, हर चेन रिएक्शन में, हर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज्ड, हीट. In one single nuclear reaction, 200 mega electron volt, 200 MeV energy generated. Imagine thousands and thousands and thousands of uranium which split. Enormous amount of heat, enormous amount of energy. जो उसमें ऊर्जा निकलता है, जो हीट निकलता है, बहुत होता है. अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो इसको चेन रिएक्शन कहते हैं. कहां हम कंट्रोल नहीं करते? एटॉमिक वेपन, न्यूक्लियर वेपन, जहां हमारा उद्देश्य होता है तबाही मचाना, विनाश. बट व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वहां हमारा काम है कि हम रिएक्शन को कंट्रोल करें, हीट जनरेट करें, वाटर को स्टीम बनाएं, टरबाइन चलाएं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें. सो हियर दिस रिएक्शन, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज क्रिटिकलिटी. सो फर्स्ट टाइम और न्यूट्रॉन, right, a neutron particle is bombarded. Bombarded to the uranium fuel. रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहली बार हमें बाहर से यूरेनियम डालना होता है. दैट मीन्स दिस इज द कोर ऑफ द रिएक्टर. Central part of the reactor is core of the reactor, where we have a fuel rods. Here we have a fuel rods. Initially there is no neutron. शुरुआत में जब हम फ्यूल रॉड को या फ्यूल असेंबली को हम लोड करते हैं कोर ऑफ द रिएक्टर, there is no neutron. So we add neutron from outside. We bombard neutron from outside. But once the neutron gets inside the core and this reaction starts, chain reaction, then with the help of controller and moderator, we control the reaction. So that means first thing is this one. Now what comes the next one? After few days,
number of neutrons, right? Number of neutrons produced in the reactor, produced in the core of the reactor, core of the nuclear reactor, that is controlled. Same control करते हैं, controlled, right? This is what we controlled by controller rod. Another very important part of the nuclear reactor is the controller rods. So what will happen now? Now the after we start the process, when we bombard from outside and the reaction starts, chain reaction starts, and then with the help of controller rod and moderator, when we control the chain reaction, it is called criticality. इसको कहते हैं criticality attain करना. That means what will happen after some time? This reaction will be sustained, right? What will happen there? The reactor will be sustained there, right? So after this nuclear fission chain reaction, nuclear fission chain reactions are controlled and sustained to generate heat, energy for production of electricity. This is called as the criticality. For production of electricity, we sustain the reaction, and this is what is called as a criticality. So what is very important is this one. So one part of the question in the coming prelims exam, one part of question can be asked on FBR, fast breeder reactor, and second part of that is the stages of the nuclear power program, and third could be this one, criticality. तो अभी जो फ्यूल रॉड को लोड किया गया है और रिएक्शन को इनिशिएट किया गया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, आने वाले महीनों में इट विल अटेन क्रिटिकलिटी, इट विल बिकम क्रिटिकल. ठीक है, इट इज गोइंग टू बिकम क्रिटिकल सस्टेन्ड चेन रिएक्शन. तो ये कॉन्सेप्ट को समझना है, दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट? तो ये चीज को ध्यान में रखना है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. जहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, देयर द यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन, या कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, वहां पे इस कॉन्टेस्ट में प्रश्न आ सकता है जो मैंने भी समझाया यहाँ पर. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है. जिस ये सारा करंट एस्पेक्ट को मैं लिंक कर रहा हूँ, करंट एस्पेक्ट को मैं लिंक करते हुए बताता जा रहा हूँ, तो ये पार्ट को ध्यान रखना है ना. करंट अफेयर्स को मैं लिंक कर रहा हूँ, तो ये चीज को ध्यान रखना है. आई एम टीचिंग राइट नाउ इन बाइलिंगुअल मोड, इंग्लिश हिंदी टुगेदर, बट दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन देयर. नाउ लेट्स लुक एट हियर, दिस द रिएक्टर, this is a fast breeder reactor, and you know Dr. Bhabha, right? जय हो. वैज्ञानिकों का हमारे देश के विकास में बहुत योगदान है. अगर ऐसे महान वैज्ञानिक नहीं होते तो आज हमारा देश जो विकास की गति में, जो भी हम स्पेस, अंतरिक्ष है ना, प्रतिरक्षा, डिफेंस, न्यूक्लियर, परमाणु में आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों का योगदान है. वी शुड गिव क्रेडिट टू सच काइंड ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट who have really helped the development of not only science and technology base of the country, but taking our country to the next level. And what you see right now, this is the FBR, fast breeder reactor, and is cooled by liquid sodium. ये reactor है,
You can see this is a controller rod, and it is immersed in a coolant called liquid sodium, liquid metal sodium. This entire core, this is a core, this is the core of the reactor. ये जो बीच का आप जो देख रहे हो, और ये बाहर का जैकेट जहां पर लिक्विड सोडियम है, that by through that it gets cooled. This is the design of fast breeder reactor जो अभी कल्पक्कम में स्टार्ट किया गया है, which has started in the Kalpakkam. So you have a core of the reactor, and what happens is uranium 238, याद रखना है, uranium 238 gets converted into plutonium. It generates plutonium, and then plutonium undergoes fission. Now this core of the reactor here, this one, is surrounded by a jacket of liquid metal sodium, not the water, not the heavy water, not the normal water, liquid sodium as a coolant. इस बात को ध्यान में रखना है. So if the question comes in the exam, this fact to be remembered. And then there is a steam generation. So whatever water absorbs the heat becomes the steam. It goes to the turbine. This is a turbine. Mechanical to electrical. It generates electricity. ये डिजाइन है. ये डॉक्टर भाभा के द्वारा जब ये आइडिया दिया गया था, in future we'll have this kind of a system there. And then now you know India's ambitious atomic energy program. भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, अभी हम 12,000 मेगावाट है ना, धीरे धीरे हम उसको 34,000 मेगावाट और 34 गीगावाट by 2040. India has a target to generate 34 gigawatt electricity or 34,000 megawatt electricity through nuclear power plants. और हमारा ये प्लान है कि आज हम 20 से ज्यादा रिएक्टर है, हमारा प्लान है 50 न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू बी ऑपरेशन इन द कंट्री. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर पार्क में तो होगा ही होगा, साथ साथ में नए न्यूक्लियर पार्क्स भी बनाए जाएंगे. न्यू न्यूक्लियर पार्क्स विल बी कंस्ट्रक्टेड. तो नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पर ये राजस्थान में यू नो रावत भाटा, कोटा के पास जगह है रावत भाटा. अब एक नई जगह की पहचान हुई है राजस्थान में, माही बांसवाड़ा. राजस्थान में कहाँ दूसरा न्यूक्लियर पार्क बनेगा? माही बांसवाड़ा. Another nuclear site has been identified. Then you can काकरा पार्क गुजरात में, सूरत के पास में. Then coming to this one, Haryana. Haryana is going to have a new nuclear park called Gorakhpur. Not Gorakhpur of UP, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नहीं. Gorakhpur is the name of a village. कहाँ पर है? हरियाणा. हरियाणा is going to have this. और वो पूरा तैयारी पे, पूरा लैंड एक्वायर हो चुका है, काम चालू हो चुका है, रिएक्टर वहां बन रहा है. बहुत ही जल्द गोरखपुर एटॉमिक एनर्जी स्टेशन विल बी ऑपरेशनल. दैट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. देन यू कैन सी हियर वेस्ट बंगाल में भी हरिपुर का प्लान था. देन कमिंग टू हियर नरोरा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में. देन मध्य प्रदेश में चुटका एंड भीमपुर. कहां पर एमपी पे प्लान है? फ्यूचर में कहां पर नए न्यूक्लियर पार्क बनेंगे? मध्य प्रदेश में चुटका एंड भीमपुर. ये दो जगह है, चुटका एंड भीमपुर, मध्य प्रदेश. आंध्र प्रदेश कोवाड़ा, where there is a proposal of having nuclear park in Andhra Pradesh, Kovada, Srikakulam in Andhra Pradesh, Kovada, that is part of this. Then Tarapur and Trombay, Maharashtra, और महाराष्ट्र में ही जैतापुर. What is the name of the place? Very, very important, Jetapur. Jetpur in Maharashtra will be the nuclear park in support of France. India and France, right, jointly, that Jetapur is being developed, and that will generate highest nuclear energy. एक पार्क से, जेतापुर में से सबसे ज्यादा एटॉमिक एनर्जी अगर किसी पार्क की बात होगी भविष्य में, फ्यूचर में, दैट विल बी जेतापुर. तो दिस अगेन द प्रपोजल इज देयर. इंडो फ्रांस. देन गुजरात में मीठी बिरधी, छाया मीठी बिरधी, बट अगेन देयर वाज प्रोटेस्ट, didn't kick up. Then Tamil Nadu, Kudankulam, Russian reactor. Russia has been a strategic partner of India, and Kudankulam atomic power station there, Russia's new reactor, that time there was a protest, Kudankulam protest. So Kudankulam and Kalpakkam in Tamil Nadu. So this is what you see. This is a part of a nuclear map of the country.
You can say this is a nuclear map of the country, है ना, nuclear map of the country. So where we have a proposed site here. So अभी जो nuclear park है, see our existing one, existing nuclear park, you know that Trombe, that is the Bark Center also. Tarapur, again Maharashtra, towards when we go from Mumbai towards Gujarat side. Then coming to Kudankulam, Tamil Nadu. Then comes Kalpakkam, again Tamil Nadu. Narora, that is Uttar Pradesh, Narora Atomic Power Station, Bulandshahr. Then Rawat Bhata, Rajasthan, near Kota there. Then Kaiga in Karnataka. Where is Kaiga? Karnataka. And then Kakrapar, that is Gujarat. This is the existing one. And which is going to be new nuclear parks. That is the proposal one is there. उसमें कई जगह protest भी हुआ है. The new nuclear park here. So if you look at new nuclear park, one is this one. This what I mentioned here. That is a Kovada in Andhra Pradesh. Then there is Srikakulam. Another thing, this Gorakhpur. Again, remember that Gorakhpur not in UP. We are talking about Haryana, Gorakhpur village. Then, which I just mentioned, India and France, Jaitapur in Maharashtra, India and France, right? Highest power generation will be there. Then I have mentioned here Chutka and Bhimpur, that is in Madhya Pradesh, MP. And then Haripur, West Bengal, but again is not taken off. And there was another part, Mithi Virdi in Gujarat. Again, there's a lot of protest. So Mithi Virdi project has also not kicked off. But अभी कौन सा चल रहा है? Gorakhpur in Haryana, that is going on. Jaitapur is going on. So very soon in future we'll have Jaitapur and this Jaitapur in Maharashtra, and then Gorakhpur, that is in Haryana, will have this. ठीक है ये चीज वहां पर. Okay, this one student is in the chat box. सर हिंदी मीडियम वालों के लिए इकरा आईएएस की नई पहल 15 मार्च वाला बैच यूपीएससी के लिए ठीक है. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है. और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, ये हिंदी के लिए भी ठीक है और अंग्रेजी के लिए भी ठीक है. मैं इसीलिए बाइलिंगुअल मोड में चीज़ों को समझा रहा हूँ. और ये यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए, यूपीएससी परीक्षा के लिए, या जो भी एग्जाम आप देंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है. करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर एग्जाम में पूछा जाता है. टू एवरी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू अपीयर, whether it is a UPSC exam or any state PCS exam, current science and technology based questions are asked in the exam. So whatever I am delivering right now, that is targeted to all exam, but particularly I am looking into the UPSC prelims exam, right? That part is there. तो ये चीज को ध्यान रखना है. This part becomes very very important. जो मैंने समझा कि we are expanding our nuclear power program. तो प्रधानमंत्री का विजिट जो है इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है. It becomes very very important. Now let me go to the next part of it. This part, what you see here, right? What do you see right now? The photograph. You know, a very important body, IAEA, International Atomic Energy Agency. अब यहां पर 3 वर्ड्स आते हैं. Let me bring here. जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3 चीजें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी. राइट. सेकेंड थिंग कम्स हियर, व्हाट इज कॉल्ड सेफ्टी, न्यूक्लियर सेफ्टी. एंड द थर्ड थिंग कम्स हियर, सेफगार्ड. ये 3 वर्ड्स है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सेफगार्ड. सुनने में एक जैसा लगता है. 3 वर्ड्स अगर हम हिंदी में समझने का प्रयास करें तो एक जैसा लगेगा, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज
they have got different meanings. इसके अलग अलग meanings. See, when you talk about safety, that is basically prevention of nuclear accidents. What comes here? Nuclear accident. What is so sorry? Here, when you say, just one second. When you say here security, accident is safety. What is security here? Prevention of this one, of not letting nuclear technology to wrong hands. सिक्योर करना है ना, सिक्योर करना, सिक्योरिटी, सुरक्षा. इसमें आता है प्रोलिफरेशन. गलत संस्था, गलत ऑर्गेनाइजेशन, एंटी नेशनल ग्रुप्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और समटाइम रॉग नेशंस के हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं आना चाहिए. बिकॉज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ये मानवता के भले के लिए भी हो सकता है और साथ साथ मानवता के विध्वंस के लिए भी हो सकता है. यू नो, एटॉमिक वेपन, nuclear bomb, and you know about Hiroshima, Nagasaki and all this, which have been used in the World War II. तो गलत हाथ में नहीं पड़े, wrong hands. Whether वो wrong hand कोई country हो सकता है, government हो सकता है, वो wrong hand कोई organization हो सकता है, terrorist organization, और wrong hand किसी भी संस्था हो सकता है या कोई person हो सकता है. उसको बोलते हैं सिक्योरिटी, सुरक्षित करना, है ना, सिक्योर करना. एक और चीज आता है अटैक, सैबोटेज. इंडिया इज वल्नरेबल टू न्यूक्लियर अटैक. हमारा जो भी एटॉमिक पावर स्टेशन और जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है उस पर अगर किसी ने हमला कर दिया, सैबोटेज किया, तो वहां भी सिक्योरिटी पार्ट आता है. इट आल्सो लुक्स इन सिक्योरिटी. सो अगेन हियर व्हाट इज अनदर थिंग हियर? Prevention of sabotage. कोई sabotage करना चाह रहा है और attack, तो what government does is that whatever the nuclear materials, here remember that, यहाँ पर जो भी चीज है जो nuclear materials है, so यहाँ पर जो भी nuclear materials like uranium and all those kind of materials, right, facilities, mining, enrichment, right, reprocessing, whatever facilities and technologies, जो technologies होते हैं are completely secured. उसको सिक्योर किया जाता है. They are completely secured. ये इसलिए जरूरी है कि ये कहीं गलत हाथ में चल गया तो मानवता के लिए खतरा होगा. इट विल बी डेंजर फॉर एंटायर ह्यूमन रेस. इमेजिन इफ such kind of organization get the technology and make the atom bomb, so they can use it against any country, any kind of group, anything. तो वहां पर है. इस केस में एक जो नाम आता है, ईरान का नाम आता है. फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स एंड आईआर, द नेम ऑफ ईरान कम्स हियर. ईरान इज ट्राइंग टू डेवलप द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देयर, तो ईरान का नाम यहाँ पर आता है. ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर है. द गवर्नमेंट ट्राई टू सिक्योर एवरीथिंग. नाउ व्हाट कम्स हियर? सेफ्टी, दैट इज अ प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स. या एक्सीडेंट्स है, taking all measures so that there are no nuclear accidents and a hazard, because you know nuclear accident could be really catastrophic. Radiation, nuclear radiation will spread air, land, water,
impact on human beings, wildlife, everything will be impacted. तो उसके लिए safety of nuclear reactor, safety of nuclear power plant, everything becomes very, very important. Safety aspect comes into it. So in this context, it comes also like this one, nuclear waste management. Proper management of nuclear waste. After the reaction, the nuclear waste which is there, they are kept and they are treated and then disposed safely under the ground or under the sea. Again safety comes. और आप सबको पता है चेरनोबिल डिजास्टर, चेरनोबिल यूक्रेन, दैट टाइम सोवियत यूनियन. आपको यह भी पता है 2011 अर्थक्वेक एंड सुनामी जापान, Fukushima disaster. So that comes into safety. So that nuclear reactor or anything, there should not be any accident. Now I am coming to this word safeguard. Safeguard. What do you mean by safeguard? Safeguard means if we are using a reactor for electricity generation or taking radioisotope for medicine, nuclear medicine, treatment of cancer and all this other application, peaceful use, should not be diverted into military program. अगर कोई रिएक्टर है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और उसके जो रेडियो आइसोटोप का उपयोग हम मेडिकल साइंस में कर रहे हैं, कैंसर ट्रीटमेंट या बाकी सब कर रहे हैं, और उसी से हम कुछ अगर एक्सट्रैक्ट करके एटम बॉम्ब बना दें, वेपन, तो सेफगार्ड का वायलेशन, दैट इज अ वायलेशन ऑफ safeguard. So what is safeguard here? Safeguard is a prevention of diversion of peaceful, I am using the word here, peaceful use of nuclear technology into military programs. क्योंकि ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी है. What is the word here? Diversion. Nuclear technology is dual use technology, positive and negative both. तो what is safeguard? कि अगर कोई रिएक्टर सेफगार्ड में काम कर रहा है तो उसका काम केवल पीसफुल यूज होना चाहिए. पावर जनरेशन या अदर यूज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटल एप्लीकेशन, उस रिएक्टर को वहां से रीप्रोसेस करके या कुछ निकाल के एनरिच करके एटम बॉम्ब नहीं बनना चाहिए, मिलिट्री यूज नहीं होना चाहिए, उसको रोकता है. तो व्हाट इज द सेफगार्ड हियर? It basically prevent any kind of misuse of the nuclear technology from peaceful application to military application. That's what there is something called safeguard agreement. And this is ensured by, this is IAEA, Atomic Energy Agency, Vienna, International Atomic Energy Agency. International Atomic Energy Agency, which is a nuclear watchdog of the world. कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड है दैट इज अंडर द इंस्पेक्शन एंड सर्वेलेंस ऑफ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. IAEA always maintains safeguard. If there is any reactor put under safeguard, it should be only and only for peaceful purpose, not for military purpose. अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं? जब हम FBR की बात करते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो अभी मैंने क्या बताया कुछ देर पहले कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अगेन थोरियम यूटिलाइजेशन प्लस एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, plutonium can be enriched from FBR, fast breeder reactor, and can made into weapons. तो वहां पर सेफगार्ड लागू होता है. क्या लागू होता है? सेफगार्ड. देयर द सेफगार्ड कम्स, राइट, देयर कम्स द सेफगार्ड. कि कोई कंट्री अगर FBR
या कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर, इवन द फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर यूजिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुड बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, शुड नॉट बी समथिंग डाइवर्टेड फॉर सम अदर यूज, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मैं इसमें अभी जो आपके जो डाउट्स हैं या जो भी है मैं इसको देख रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी देयर। सो ठीक है, ये चीज सही है, यस दिस पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग, गुड, दैट्स व्हाट, सो आई एम लुकिंग एट योर all the messages there, so that's really good that I'm able to see all your messages right now. मुझे अच्छा लग रहा है कि I'm able to interact with all of you, right, and part of it, ठीक है। so anyway I'm now going to the next topic, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डिस्कस किया। now coming to this one, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया पंकज, I will get back to the topic here, right, one student asked in the doubt there, Agni 5 MIRV, Agni 5 MIRV, just it is making the news, successfully tested, है ना, इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग किया गया है, what you can see here, Agni 5 this missile by DRDO, है ना, ये 3 स्टेज का मिसाइल है, इसमें रॉकेट जैसा काम करता है, रॉकेट प्रोपेल्ड होता है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके 3 चरण है, 3 प्रोपल्शन सिस्टम आता है, 1 2 3, एंड अग्नि 5 यू नो 5000 किलोमीटर्स, इसको क्या कहते हैं, ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो अभी जो न्यूज में है दिस वन, अग्नि 5, वी हैव बीन मेकिंग दिस अग्नि 5 फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, मैं समझाऊंगा व्हाट इज MIRV, व्हाट इज फर्स्ट थिंग हियर, अग्नि 5 को क्या कहते हैं, सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, नाउ व्हेन वी से सरफेस, लैंड सरफेस आल्सो, वाटर सरफेस आल्सो, हम दोनों जगह से मार कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है अग्नि 5 के बारे में, इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, you know that cruise missile and ballistic missile, क्या होता है ballistic missile, which goes like a rocket against the gravity of the earth and then return back, this is called ballistic, is propelled like a rocket, it goes to the atmosphere and then come back, है ना, फिर वो वापस लौटता है, it returns back there, ठीक है, that is called ballistic, that is what is called as a ballistic missile। cruise क्या होता है, it remains in the air maintaining a distance from the ground, but ballistic will go and come back, the ballistic missile, surface to surface। what is third next thing here, the range is 5000 kilometers, right, 5000 kilometers, इसको कहते हैं ICBM, intercontinental, from one continent we can go to the next continent, continental ballistic missile, and you know that this project of Agni, Prithvi, Nag, Trishul, Akash, 5 missiles were developed under the guidance of Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Kalam, wings of fire, right, Dr. Kalam का योगदान रहा है, IGMP program, integrated guided missile development program 1983, which India started, and because of that program today we have such kind of missiles, and Agni missile can carry here, यहाँ जो है इसमें फिर क्या ध्यान रखना है, एक और चीज है अग्नि मिसाइल का, यहाँ पर 3 स्टेजेस प्रोपल्सन सिस्टम होता है,
यानी कि इसमें 3 इंजन होते हैं. Stage 1 just like a rocket, you know the PSLV, solid liquid 4 stage, GSLV solid liquid cryogenic. उसी के तर्ज पे, उसी के जैसा जो है यहां पर है. ये PSLV या GSLV नहीं है, ये स्पेस साइंस का रॉकेट नहीं है. इट इज अ मिसाइल. व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, मिसाइल. उसी तर्ज पे, सेम एज दैट, इट हैज गॉट 3 इंजन. फर्स्ट इंजन, सेकेंड इंजन, third engine. 1, 2, 3. What is another thing here? It can carry both conventional and nuclear warheads. हम इसमें न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकते हैं. टिप ऑफ द मिसाइल. अब यहां वर्ड आता है वॉरहेड. Normally जो मिसाइल बनाए जाते हैं टू ऑन द टिप ऑफ द मिसाइल टू कैरी वन वॉरहेड, सिंगल वेपन. दैट कुड बी नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव और इट कुड बी न्यूक्लियर वेपन. अग्नि मिसाइल इज इक्विप्ड विथ आल्सो न्यूक्लियर वेपन्स. दैट वाज गिवन. Either it can be conventional explosives or nuclear. It can carry there. Now what is very important here? Now this one we have now developed into MIRV. बहुत दिनों से इससे काम चल रहा था. अल्टीमेटली अब इसको डेवलप करके टेस्टिंग किया गया है. MIRV is called multiple independent re-entry vehicle. This is called as a multiple independent re-entry vehicle, MIRV. Multiple independent re-entry vehicle. What is multiple independent re-entry vehicle? That single missile can carry multiple warheads and it can be dropped into different targets. Even the targets are hundreds of kilometers away. So if we draw a diagram here, तो ये जो है यहाँ पर, that means it can carry multiple warhead. What is here? Not only single warhead, but it can also have multiple. Many warheads can be carried there. है ना, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है. व्हाट आई हैव रिटन हियर. अब इसमें ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आई विल ड्रॉ अ डायग्राम हियर. लेट्स लुक एट द डायग्राम हियर. व्हाट इज MIRV and I am drawing with the diagram here. Same missile which goes there, ठीक है, same missile which goes there, it can drop one warhead here. ये टारगेट हो सकता है. Then as it goes here, it can drop another weapon, another warhead, another target can be destroyed. Then as it goes here, it can drop the third to the target. This is the meaning of MIRV. That means the carrier will be the same, but different warheads will be there. And as it goes in the air, it will drop one warhead, destroy target. It will go up, another warhead, another target. As it goes up, another warhead, another target. So even 3 different targets, different locations, even they are hundreds of kilometers away from each other, can be destroyed. और अग्नि 5 जो है 10 वॉरहेड्स को ले जा सकता है. MIRV is capable of taking 10 warheads and we can destroy 10 targets. That's what the Agni 5 has been developed. And at the same time, intercontinental, different continents from Asia, then we can go to Africa, part of this.
and this is a very important to counteract China. Again, the geopolitics comes. China's kind of thing. We have developed this one, MIRV, and a multiple independent re-entry vehicle that comes into this. So if you look at here, this part, right? You can see here, MIRV 2 weapons are there. MIRV 3 weapons are there. MIRV 10 weapons are there. And you can see ballistic missile, there's been now MIRV 2 to 10 capable. So here, this when you talk about MIRV, Agni 5 MIRV, so it can take from 2 to 10 warheads. That can be dropped by Agni 5 missile. So MIRV here 2 to 10, that means either this one, that warhead, it may have like one missile, second missile, right? MIRV 3 is a MIRV 2, then MIRV 3 will have this one 1, 2 and the third. Three weapons at one time. And MIRV 10 can be 10 weapons. Where it is kept? It is kept here on the highest point of the missile. This one. This MIRV 2. Or this one on the top there, tip of the missile. The tip of the missile, this warheads are there. 3 targets can be destroyed. And here, same way, on the tip of the missile here, 10 of them will be there. Ten of them will be there. 10 targets. Single missile, but so many targets can be destroyed. And we can carry nuclear weapon also there. Right? We can carry nuclear weapons also there. अब ये न्यूज में है ना? आपके यहाँ कहाँ पर न्यूज में? ये न्यूज में कि DRDO has successfully tested this one MIRV, और जो अभी न्यूज में यहाँ पर इसके पार्ट में आता है. तो ये चीज को ध्यान रखना है. दिस इज अ वेरी वेरी important here, what I mentioned here. ठीक है. Now look at here, what is given? Operational range 5,000 kilometers. Height इसका 17 meters है. If you look at Agni 5 missile, is almost 5-6 story built. It's a very tall missile is there, just like a rocket. Then what is technology? Stands for multiple independently targetable re-entry vehicle. क्या full form है? Multiple independently targetable, the different targets, re-entry vehicle. Then this technology allows single missile to carry multiple warheads, जो मैंने अभी समझाया. Then India joins the select group P5, right? India becomes a part of P5. P5, which are the P5 permanent 5? US, UK, France, Russia and China. Don't forget China. अभी तक MIRV के जो टेक्नोलॉजी है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास में, 5 कंट्रीज के पास में, 5 कंट्रीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, US, Russia, China, UK and France, and now India. Now India becomes the 6th country in the world to have this technology of MIRV. So India becomes the 6th country, right? India is the 6th country in the world to possess this technology. Which other countries? बहुत सिंपल याद करने का. बाकी जो 5 कंट्रीज है सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं, US, Russia, China, UK and France. India becomes the 6th one, right?
इंडिया बिकम्स द सिक्स्थ वन. दिस व्हाट आई हैव गिवन हियर. सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना है, ये चीज है. यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना एमआईबी टेक्नोलॉजी एंड दिस डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस क्लोजली गार्डेड सब्जेक्ट, इसको पूरा छिपा कर रखा गया, ओपन नहीं किया गया. दिस व्हाट हैज कम हियर, राइट. मल्टीपल इंडिपेंडेंट, मल्टीपल इन टारगेटेबल और टारगेटेड इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल. तो टारगेटेड वर्ड इज ऑल्सो देयर. सी हियर this one, multiple independently targetable re-entry vehicle, right. This one, multiple independent targetable, you can also write here targetable, different target is a targetable re-entry vehicle, MIRV, right. This is what I have explained here, and इसको ध्यान में रखना है, right. Now I'll take one more topic here. What you see right now. Any idea क्या है ये? ये भी न्यूज में रहा है. कोई बता सकता है क्या है ये? What is this? Any person? अच्छा, मेरा भी लैपटॉप में वो डिस्चार्ज हो गया है, तो मैं आपका चैट नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं मोबाइल में आपके चैट को देख लेता हूँ. Let me open the mobile part where I can see your chat box there. हाँ, तब तक के लिए आप जवाब दे सकते हो. क्या आप देख रहे हो फोटोग्राफ में? व्हाट यू सीइंग द फोटोग्राफ? व्हाट आर थिंग्स यू आर सीइंग इन द फोटोग्राफ? पैराबोलिक पाथ, yes, Pankaj, you are right. You are very right that Madan has given the answer BrahMos, not BrahMos. ठीक है, और कोई देना चाहे जवाब? इट इज नॉट ब्रह्मोस. ये ब्रह्मोस नहीं है. नाउ एनीबॉडी एल्स? पंकज, क्या इसका आंसर है बताओ? यस, व्हाट इज इट? नो, इट्स नॉट ब्रह्मोस. ध्रुवास्त्र. व्हाट इज नेम हियर? ध्रुवास्त्र. What do you see here? ध्रुवास्त्र. ये ट्राइपोड है. The man portable tripod. It can be taken in the battlefield, right? Man portable tripod. And what you see right now, this missile, right, is basically a part of what is something here. इसको टेस्ट किया गया हेलिना. ये नाक का, ये बेसिकली क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन एंटी टैंक, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, वेरी एक्यूरेट वन, विल हिट द बैटलफील्ड टैंक. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एटीजीएम. नाग का ही फॉर्म है. नाउ इट कैन डिस्ट्रॉय. हेलिना इज व्हाट? बेसिकली हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग. which is fitted in advanced light helicopter Dhruv. ध्रुव हेलीकॉप्टर की का ये ध्रुवास्त्र है. इसका नाम ध्रुवास्त्र क्यों रखा है? क्योंकि इसको कहां पर हम यूज करेंगे? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव. ध्रुव विल हैव दिस missile, anti-tank guided missile Helena in the advanced light helicopter Dhruv, and this can be fired from air to surface. Air to surface by using the advanced light helicopter. और इसका टारगेट क्या क्या है? What will be target of Dhruvastra?
target, if you look at, one is a heavily armored, जो armored vehicles होते हैं, such as battlefield tank. That's why it's called anti-tank guided missile. So, क्या बोलते हैं? बैटलफील्ड टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना, ATGM कहा जाता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है. ध्रुवास्त्र नाम क्यों है? क्योंकि ध्रुव हेलीकॉप्टर में इसको हम यूज कर सकते हैं. हेलिना बोलते हैं, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग है. ठीक है, जो ऐसे आर्मर्ड वेरी हेवी होता है जैसे कि बैटलफील्ड टैंक, उसको हम एयर टू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. 500 मिनिमम इसका जो रेंज है, minimum 500 meter to it can go up to 7,000 meters. हाफ किलोमीटर 500 मीटर 500 मीटर्स से लेकर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर्स और 7,000 मीटर. दैट इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर ध्रुवास्त्र. राइट, दैट इज द रेंज ऑफ दैट. तो वहां पर हम उसको यूज कर सकते. राइट, दैट वेयर वी कैन यूज दिस. एंड व्हाट यू कैन सी राइट नाउ, राइट, क्लियर हियर. दिस इज द ध्रुव. ये लाइट हेलीकॉप्टर है, बिल्ट बाय HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. और उसके नीचे वहां पर हेलिना होता है, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग. दिस वन, कैन यू सी इन द बॉटम हियर, दिस वन. The two missiles are kept here, and now this is the same one and the two. See the image photograph. This is a Dhruv helicopter, this one, and this is the zoomed out this one. ये carry करते हैं. This two Helena, helicopter launch nag, Dhruvastra. What is the name given? Dhruvastra. They're kept with the helicopter. So that was in the news, right? और कई बार करंट अफेयर्स केवल 1 साल का नहीं, 2-3 साल के भी पूछते हैं. Last 2 to 3 years current affairs can also be asked, right? तो फॉलो करना है. डिफेंस न्यूज जो भी है, करंट डेवलपमेंट होगा वो फॉलो करना है, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ इट. नाउ दिस वन, MQ1 Predator drone. Is USA. From where we have got this drone? When Prime Minister visited, when he went to the USA. When he went to the USA, there was a deal with US. One is this one, where MQ1 is a very advanced drone which is used for reconnaissance, surveillance, and even for combat operation. Just like a mini aircraft. It can carry the guided weapons. Okay, guided weapons it can carry. So that was in the news there. And for Navy, right? For Navy, the same thing you can write. You can see how big is this. It's called Predator drone. You can see the size, right? You can see the size here. It's a big size. बड़े size का ये drone है. From US we are already using it, but we have again now the deal with the US to buy more. Now Navy के लिए Sea Guardian, what is called here? Sea Guardian. Now see here, this is the Sea Guardian. ये Navy के लिए. For Navy we have got Sea Guardian. Sea Guardian, that is again a drone. From America we have this, we have bought this, and you can see for Navy part, Indian Navy. For Indian Navy we have got this
फ्रॉम द यूएसए वी अबाउट, है ना, यूएस से हमने खरीदा है इंडियन नेवी के लिए। सो अभी अगर आप यहाँ देखें, इसमें जो मेन पॉइंट क्या क्या है, इसका टेक ऑफ वेट जो है 5670 किलोग्राम, यानी कि जब वो ग्राउंड से टेक ऑफ करते हैं 5670 किलोग्राम। फ्यूल उसकी जो कैपेसिटी 2721 किलोग्राम है। पेलोड जो है कितना वो वजन ले जा सकता है, कितना हथियार ले जा सकता है, कितना वेपन ले जा सकता है, 2177 किलोग्राम अक्रॉस 9 हार्ड पॉइंट 8 बीइंग 1 सेंटर लाइन होता है। इसको 2 पायलट चला सकता है। दिस आर ड्रोन देयर, अनमैन्ड व्हीकल, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो 2 ऑपरेटर्स remotely right, is a remotely piloted aircraft, right, which can be operated by 2 pilots on the ground, can fly this one, right. Then coming to here control system, कहाँ इसका laser guided missiles, there could be missiles from this drone, Predator drone, which can be guided through missile laser beam. Again you can see anti tank missile, even this drone can carry anti tank missile। अभी जो मैंने बताया हेलिना के बारे में बताया, नाक का ही वर्जन, तो एंटी टैंक मिसाइल कैन बी कैरिड बाय दिस ड्रोन। देन अगेन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंटी शिप मिसाइल फॉर नेवी टू डिस्ट्रॉय एनिमी वॉरशिप्स, वी कैन फ्लाई दिस ड्रोन एंड कैन डिस्ट्रॉय द एनिमी वॉरशिप। तो अगेन यू कैन सी नेवल, दिस वन, इट कैन ड्रॉप द वेपन, that could be used, right. Is a very advanced drone of America which India has purchased here. Now mission क्या है, disaster relief में कर सकते हैं, humanitarian assistance, search and rescue, drone can be used for search and rescue operations, some kind of calamities, disaster or any kind of a conflict areas, right, there for assistance, even to drop food packet, medical, water, food can be dropped by this drone। इस ड्रोन को हम, है ना, अनमैन्ड होता है और उसको हम चला सकते हैं और उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे रिलीफ पैकेट्स वगैरह। देन कमिंग टू दिस सर्च एंड रेस्क्यू, लॉ एनफोर्समेंट, व्हाट इज लॉ एनफोर्समेंट, सर्वेलेंस, वीवीआईपी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एंड देन दैट एरिया इज सर्वेड बाय द ड्रोन। सो दैट पार्ट comes border enforcement, border area, across the border areas the drone can fly and can survey the border areas. It has advanced cameras, sensors, advanced camera and sensor can survey the border areas. Then again defensive counter air, anti drone, if there is an enemy drone and we can use Predator, and the Predator will have missile and laser guided missile, so we can hit the enemy drone, anti drone. रॉग ड्रोन्स, दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं, बॉर्डर एरिया कहां पर है, हम अपने प्रेडेटर से उसको खत्म कर सकते हैं, वी कैन डिस्ट्रॉय देम। और अब ये खतरा बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान is getting all these drones from China, and even Pakistan is using such a drone for not only for terrorism activities but also for drugs, illegal supply of drugs, even the weapons, illegal supply of weapons, drugs across the border. 2023 mains exam, there is a question on drone with respect to national security, internal security and national security, where the drones are being used across the border to supply the arms, drugs and all this. How can we take care of such drones? So we have this kind of combat measures. Predator will like predate, जैसे होता है ना tiger is a predator, वो हिरन को मार के खा जाता है, वैसे ही predator drone दुश्मन के predator को खोज कर खत्म कर सकता है. That part of this. Again this part of the, then airborne early warning, very important. AWACS, airborne early warning, when this predator will fly, any kind of aerial targets, any kind of aerial threats, whether it's a rocket, missile or any drone or even the fighter craft or helicopter of enemies, it will survey the air and will send, there is a sensor will send the signal to the ground level. So the ground station, control station, which is flying the predator drone, guided through the communication system and sensor. So whatever the
this will find out in the aerial area and on the land and or on the sea. This information will pass to the control unit and will provide early warning of any kind of potential attack from the enemy side. Airborne early warning. Another very, very important thing which I am discussing right now. This is what becomes here. Then it has a mission electronic warfare. हम जिस सिस्टम को जैम कर सकते हैं, दुश्मन का जो एरिया है उसके जो सिस्टम होगा उसको हम जैम कर देंगे, जैमिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ईडब्ल्यू. Then coming to anti-surface warfare, missile, rocket which it carries can attack the surface target, land surface, water surface. Anti-submarine warfare, another very important. Let's say under the ocean there is submarine. There is a submarine. Enemy submarine is there. So these enemy submarines can be destroyed by the predator. This is the Sea Guardian. The Sea Guardian, what is called as a MQ-9. This is MQ-9B. Even it can destroy enemy submarine under the water. Then airborne mine control measures. If there is any kind of sea mine, even inside the sea there could be mines or land mine, it can find it out there. Long range strategic information gathering, जासूसी करना, spying करना, intelligence input, it can happen there. And then over the horizon target, that means when it flies, border areas will be another. But this drone with the advanced camera will be able to see across the horizon if there is any kind of a target. See, when question will be asked in the exam, remember that. When the question will be asked in the exam, it will ask you all those kind of dimensions. उसमें सारे dimensions का question होगा. एक dimension नहीं होगा, सारे dimensions होंगे. And you have to know the fact, range, fact, speed. Now, what are the mission objectives? All these things you have to remember it. And that could be asked in multiple choice question. It is a very, very important from security point of view. This technology, what we have got from America, plays very, very important. One is a normal MQ-1 and now we have MQ, what is the name here? 9B for Navy. Right? It's a very, very important topic there. So that you have to be aware of this. Drone and this all part has really become very, very important for the examination. ठीक है, करंट अफेयर्स में यही चीज है कि बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ना है. लेट मी सी योर एनी डाउट. ओके, ललित कुमार हैज जॉइंड नाउ. नमस्ते सर. नमस्ते ललित जी. राइट, ध्रुवास्त, यस पंकज, यू आर राइट. दिस पार्ट इज देयर. ऑलराइट, सो आई एम सीइंग योर चैट बॉक्स. ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से तैयार करना है. दे ऑल विल बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. That is this one. Another very important topic of prelims. Any guess? Any guess? What is this? क्या है ये? I'm looking at your chat box. In the mobile phone, I'm looking at your chat box there. Anybody in the class right now, live session, can tell me what is this? Yes, warship. Definitely warship, right? But what is his name? Warship, you are right. But what is the name? Can anyone tell me the name of this warship? It was in the news. ये news में काफी चर्चा में रहा है, right? News में काफी चर्चा में रहा है. Yes, Pankaj, Madan, all those people who are there. Nobody? Okay. Is INS Imphal. Is the INS Imphal. This was in the news. INS Imphal. What is INS Imphal? INS Imphal is a stealth guided missile destroyers.
INS Imphal is a stealth guided, stealth मतलब that will not be easily detected by radar and the guided missiles, and is a destroyers, is a warship. Now it belongs to Visakhapatnam class. It belongs to Visakhapatnam class of destroyers. Navy में, in Indian Navy, when you say class, means within the same class there will be number of ships will be there which have same features, same designs. And INS Imphal is the third destroyer warship in the Visakhapatnam class में तीसरा है, और ये पहला है जो किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैपिटल के नाम पे. इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, राइट. इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, उसके नाम पे इसको रखा गया, राइट. मणिपुर की कैपिटल इम्फाल के नाम पे पहला है, फर्स्ट वन. इट हैज बीन गिवन दैट नेम. नाउ इट हैज ए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. It has got historical significance. So again, from Navy, destroyers and all this, you have to be aware of that. So it has got importance from there. So if you look at this one here, इसका जो बैज है, अब मैं इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बताता हूँ. इसका जो बैज है, ये जो आप देख रहे हो, ये चीज कांगला, this is called Kangla Fort, and this is a Kangla Sand. अब मैं बताता हूं क्या है. मैतीज ये और आपको करंट अफेयर पता है, अभी रिसेंटली मणिपुर वायलेंस, मैतीज एंड कुकीज. तो मैतीज कम्युनिटी इज राइट, दैट इज ऑनर, राइट, ऑनर ऑफ मैतीज देयर. Kangla Fort, that is a place, in Imphal, there is a place called Morang. What is the name of the place? Morang. And Morang is also famous because there near Morang there is a Bishnupur. Morang, which is known for Loktak Lake, world famous Loktak Lake, right? Kibul Lamjao National Park, Loktak Lake, Sangai deer, dancing deer, Fumdi, floating mass of vegetation and all this, in the same nearby area. And there is a war memorial and museum. उसी जगह पे what you see here is a Kangla Fort. So I am now linking with history and part of the Indian history part, Kangla Fort. Now this is where the Meiteis king, at that time the Meiteis which conquered, they fought war and conquered the area and hold that time this fort is there, Kangla Fort. When you read history, you will have come across Anglo-Manipur War, right, British time. Now what I am adding another dimension. This is the badge of the, ये बैज किसका है? INS इम्फाल का. अभी जो डिस्ट्रॉयर मैंने दिखाया उसका बैज है. इस बैज में किसकी तस्वीर है? कांगला फोर्ट का किला है. कहाँ है? मोरांग कहाँ है? इम्फाल में. और किसके ऑनर पे? मैतीज जो है उनके तौर पे ये फोर्ट है. व्हाट यू कैन सी हियर इज अ वेरी पॉपुलर साइट हियर, एंड यू कैन सी हियर दिस इज द म्यूजियम आल्सो. और अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, right? If you go back to the history, modern history, Morang is the place where Netaji hosted the flag. हमारा जो तिरंगा जो है झंडा, उस तिरंगे झंडा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने वहां पर मोरांग में उसको फहराया था. आजाद हिंद फौज जो है उसका वहां पर बटालियन और उसका वहां यूनिट उस जगह पे मौजूद था जहां पर अभी कांगला फोर्ट है.
और आपको पता है कि अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का जो फाइट था 1944, मोरंग, दैट प्लेस कम्स इनटू दैट, and there is a memorial there, museum is there, INA War Museum, Moirang. See here the name. And there are, in the within the museum, you have all the artifacts and everything of Netaji. बढ़े चलो, दिल्ली चलो, right? Subhash Chandra Bose and his contribution is immense. And when I'm saying 1944, now we are in 2024. How many years? कितने साल हो गए? 44, this hosting of flag, Morang, Manipur, capital Imphal, on which the name INS Imphal, that warship, the destroyer, has been given. और उसके बैज में कांगला फोर्ट है. तो 1944 and now 2024, how many years have passed by? कितने साल बीत गए? कितने साल बीत गए? 80 years, 80 वर्ष, right? That is the historical aspect. And again, what I said, Maithi's community there. That's what you'll find here. So what the fact is that when you come across such name here, stealth guided, Visakhapatnam class, INS Imphal, so you should also get to know why it is named Imphal, why it has been given the name Imphal. Because of this Kangla fort, right? This is what you see here. This is a Kangla fort. मैं लिख देता हूं मैं, Kangla fort, which is basically a testimony of this of the kind of a gallant and valor of Maithis. They are the Maithi rulers, right? That area which captured this is what we find. This particular Kangla fort is there, and same Kangla fort you can see here in the photograph. Now this is the badge. This is the badge of INS Imphal. And INS Imphal का ये बैज है. तो वहां पर ये दिया हुआ है, और ये सांग क्या वो एनिमल दिखाया गया. और सेम जगह क्यों इंपॉर्टेंट है? INA वॉर मेमोरियल, मोइरांग, linked with Netaji, Subhash Chandra Bose, Ajad Hind Fauj. And I said Moirang is also known for another environmental aspect, Loktak Lake, where you have floating mass of vegetation, Phomdi, and also you know the Kibul Lamjar National Park, dancing deer, Sangai deer, all these are part of. Connecting the dots, that becomes very important. ठीक है, उसको ध्यान में रखना है. Let's move on there. I think you all are able to understand here. And any doubt you have, please let me know. I'm looking into mobile phone. If you have any doubt, you can let me know. मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, तो उसमें मैं देख नहीं पा रहा हूँ. मैं मोबाइल फोन में आपके जो भी डाउट्स वगैरह है वो देख रहा हूँ मैं. Whatever you are asking right now. ठीक है. And after this video, those will see the recorded video. ठीक है. तो वहाँ तो मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों से. But yes, if you are looking this video after this session, तो ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है. You have to keep in mind there. ठीक है. तो चलो बढ़े चलो. Next one. This one. Any idea? Another current affairs? Anybody in the classroom right now live can tell me what is this? It's very, very important. Anyone? Yes. I don't see any reply from your side. आपके चैट बॉक्स में मैं कोई रिप्लाई नहीं देख पा रहा हूं. कौन बताएगा what is this? जटायु, INS जटायु. This is in the news. Indian Navy has set up a military base. Naval military base
in Minicoy Island of Lakshadweep. Now this base, this is given the name INS Jatayu. इसका नाम दिया गया INS जटायु। और ये जो जगह जो मिनिकॉय जो ये जो जगह बेस जो है, दिस बेस इज नियर टू मालदीव्स, इज नियर टू मालदीव्स। अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। Recently, India and Maldives relation and the China is giving certain type of loan and fund to Maldives, right? And you know the recent President Muizu, under the influence of China taking the part, Maldives asked the Indian government to withdraw all its military vessels, right? Withdraw all military vessels. नेवी को विड्रॉ करने के लिए दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया। तो यू नो दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड लक्षद्वीप टू प्रमोट टूरिज्म देयर, where many people started going to Lakshadweep. One of the sources of income, you will say primary source of income for Maldives is tourism. To be counteract with that by the PM's visit to Lakshadweep. अब मुइज़ू जो है अपने जिद पे अड़ गया है, नहीं नहीं नहीं, भारत अपना मिलिट्री वेसल यहां से हटाओ, नेवी को हटाओ। क्यों? चाइना के माया जाल में मालदीव फंसा हुआ है। मालदीव इज अंडर द ग्रिप ऑफ चाइना, दैट मीन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, द प्रेजेंट पॉलिटिकल हेड ऑफ मालदीव्स। तो हमने क्या तैयारी किया है कि हम रहेंगे, इंडियन ओशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्ट है, हम रहेंगे इंडियन ओशन में और तुम्हारे पास रहेंगे। अगर वहां नहीं रहेंगे तो मिनिकॉय में रहेंगे, ठीक है? आवर जियो पॉलिटिक्स एस्पेक्ट, दैट्स वेयर दिस पर्टिकुलर नेवल बेस हैज बीन नाउ कमीशन्ड इन मिनिकॉय आइलैंड फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज नाउ चाइना, यू नो दैट दिस वन China's influence here. So the present this Muizu asked the Indian government to withdraw all the naval vessels from there, and now arrival of Chinese military vessel. In IR you will find, you will study pearl of string theory. International relations पढ़ेंगे pearl of string theory. China's strategic policy to cover India, right, by having relationship with all those island nations or all those kind of countries which are around India. Maldives is also one of them. So if Chinese military vessel will come to Maldives there, मुइज़ू को पता नहीं वो क्या कर रहा है वहां, तो we have to counteract our security. We have to look at our kind of security part. So we have set up our base Jatayu. Very important name Jatayu. You know Jatayu bird, रामायणा है ना, उसकी नजर में रखने के लिए जटायु किया गया। तो दिस वाज इन द न्यूज, राइट, दिस वाज इन द न्यूज। See here the commissioning here, INS Jatayu, right, the naval base. Now this is to counteract China's presence in Maldives. उसके लिए ये किया गया, this one, right, this is what we have done, right. So I can see here your messages I can see in the chat box, right, that's right. Now let's go to the next level here, this one. Another important topic from current aspect. You all know that Vikrant, INS Vikrant, the new INS Vikrant, aircraft carrier,
right? This is aircraft carrier here. This is indigenously developed, right? Developed aircraft carrier of India. And is built by Kochi Shipyard Limited. Kochi Shipyard Limited. And this Vikrant is double the size of the old Vikrant. The old Vikrant, the old INS Vikrant, this was decommissioned. It was decommissioned in 1997 and dismantled. Right? And was dismantled. Scrapped. And then Kochi Shipyard Limited built the double the size. Earlier it was 19,500 displacement, 19,500 ton. 1 ton equal to 1,000 kilogram. 1 ton equal to 1,000 kilograms. So older Vikrant was 19,500 tons. The new Vikrant is double the size. Is much bigger there. And you can see this is a dock. Now what is very important here? This is called sky jump. What you see, this platform is called sky jump. So fighter jet can take off. Right? Fighter jet, right? Sukhoi, MiG, Tejas, it can take off easily from the sky jump. It can take off. That is, you have a inclined platform and you have a dock here. It can house thousands of sailors. It has number of kitchen. It has even the multi-bed hospital in the ship you have. It is a formidable defense barrier for the country. पहले जो INS विक्रांत था 1971 इंडो पाक वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971. That time you know that Pakistan sent Gaji, PNS Gaji, चिट्टागोंग पोर्ट इन बांग्लादेश. अब बांग्लादेश नया कंट्री है, लेकिन उस समय क्या था, ईस्ट पाकिस्तान. चिट्टागोंग इन दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान. Pakistan sent PNS Gaji, fast attack submarine, in the Bay of Bengal to reach to Visakhapatnam, where we had an older Vikrant. You have seen the movie Gaji Attack. आप लोग फिल्म देखा होगा गाजी अटैक, कि कैसे हमारा सबमरीन को पता चलता है कि ऐसा है ना, पाकिस्तान का सबमरीन है एंड इज पार्ट ऑफ इट. फिर आपने ये भी फिल्म देखा होगा, बाद में एक फिल्म आई राजी आलिया भट्ट, where Alia Bhatt becomes an Indian detective, भारतीय जासूस सहमत, married to the son of their general of army of Pakistan, and she finds out that information that Pakistan's plot to attack India and get into India through water, through sea, through Bay of Bengal, right? That was the plot. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप राजी देखो. First you see Raji and then you see Gaji. You'll be able to connect the dots. This was there, but then now 1997 we dismantled it. भारत को आज 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन. हमारे पास 2 है फिलहाल. वन इज द विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य, that is not ours, that we have purchased from Russia. You know Admiral Goskov,
What is the name of the original name of the Vikramaditya? Admiral Goskov, Russian fighter aircraft carrier. We purchased from there. Then we have developed new Vikrant aircraft carrier, and recently there was a INS Virat which we decommissioned. तो अभी बच गए केवल 2. We are only left with 2 of aircraft carriers, and we need more. So already central government has given budget and finance to build more aircraft carriers in our country. Aircraft carriers को बनाने के लिए और फंड दिया गया. हमें और विक्रांत की जरूरत है. Right? This is what we require for the Navy. And ये बहुत important होता है. It is almost like a monster. इतना बड़ा होता है. Biggest size. You have thousands of people on the dock. 30 fighter jet, 30 can be the part of it. यहाँ पर होता है stow bar. What is stow bar? Short takeoff and arrested landing. Short takeoff. Because the runway, you have a runway here. You can see this is a runway. So runway is not very long. So the fighter jet has to immediately short time takeoff. And when it returns back, there are wire system which where the fighter jet has to come like this, and then it has a hook, and there wire which can put in the wire, and wire will pull it back. What is something called arrested landing. Tejas, light combat aircraft Tejas, fulfill this requirement of stow bar, short takeoff but arrested landing. Tejas has fulfilled that need of the Navy. MiG, Sukhoi, MiG and Sukhoi from Russia. We have this in the part of it. तो ये बहुत important है. Now some vital stats. Of Vikrant. Let's look at here. 20,000 crores. It was 20,000 crore rupees spent for this particular INS Vikrant. 20,000 crores. Another thing here. Double the size of older Vikrant. What was the size of older Vikrant? 19,500 tons. But this is 45,000 tons. Double the weight, right? Then 262 meter long, this one, this length. The length is this one length. How much is the length? Length is 262 meters. 200 plus meters. 200 meter बहुत होता है. Imagine 200 meters. If you walk 200 meters, is 262 meters. Such a big one, right? Then coming to this one, this width, ये width है. चौड़ाई. What is the width here? Width is 62 meters. Width is 62 meters. 262 meter long. So such a lengthy, very long. 200 meter बहुत होता है. 250 meter, 250 meter, 262 meter is very long one, and 62 meter wide. This is the fact here. Then coming to here, the width is given here. Then 28 knot speed, very very important. 28 knot. KNOT, knot. Knot is what? Nautical miles per hour. एक घंटे में nautical mile cover करना. 28 nautical miles के स्पीड में एक घंटे में 28 nautical miles travel कर सकता है सी में. How much is 1 nautical mile? 1 nautical mile is 1.8 kilometers. Imagine almost 2 kilometers. 2 into 28, that will come around 55 kilometer per hour. 55 to 60 kilometer per hour speed. It cruises on the water. 28 knots, that is speed here. Then 2,300 compartments. What do you see here, this one? It has got 2,300 compartments and rooms are there. You can now imagine how many people can stay there. It has a kitchen,
right? Dining hall, everything. Then you have a 1,700 crew members. That means within this 2,300 compartment, it can house, right, 1,700 sailors or crew members, including the officers, right? MiG-29K fighter jet. It has got MiG, right? It houses the MiG-29K, which is advanced MiG fighter jet. Then Kamo, there is a helicopter of Russia, Kamo 31 helicopters. Then see, both of these are from Russia. Both of these are from Russia. MiG-29K and Kamo is a combat helicopter. Then coming to this one, another one is called here MH-60R multi-role helicopter. What is here? MH-60R, which is called multi-utility helicopter. Search and rescue, relief operation, humanitarian assistance, all this can be there. So multi-utility, multi-purpose, multi-utility helicopter is there. So even it can be used for humanitarian assistance, not only during the war time but also peace time, natural calamities and all this one, or taking off the people who are in distress. So again, we can use this kind of aircraft carrier. Then top feature, if you look at, first aircraft carrier to be considered in India. This is the first indigenous aircraft carrier developed and built in India. Then coming to largest warship to be built in India. Right, largest. See here, India's first indigenous built aircraft carrier by which company? Kochi Shipyard Limited. And it is the largest kind of warship in India. First time, largest warship built, 45,000 tons, right? Then has capability to operate 30 aircraft. How many aircraft could be here? 30 aircrafts it can have. Fighter jets and all, 30 could be there, right? Then comes here 15 decks. It has got 15 decks. 15 decks and a multi-specialty hospital. It has a hospital, multi-specialty hospital. So during the war time, this hospital, all the casualty of sailors and soldiers, they can be treated in this particular hospital. 15 decks, multi-specialty hospital. State-of-the-art hospital, multi-specialty is there. Then you have here a pool also, swimming pools and all this one. Specialized cabins for women officer, another thing. It also has a specialized cabins for women officers. For women officers. Now you know that Nari Shakti, Army, Air Force and Navy, they are now increasing more and more women officers. Nari Shakti. And this time Republic Day, 26 January. All those kind of exhibition on the Kartavya Path, India Gate, they were done by women. Most of the things were by women officers. Even fighter jet flown there, the army part, then again Navy part. So there are specialized cabins for women officers. That is what comes here. You have here something around specialized cabins for women officers. Right? Now you can see here, crew member 1,700, 2,300 compartments, top speed 28 knots, cruising speed 18 knots. Cruising speed means normally when it moves in the water, 18 knots, 18 nautical miles per hour. But when it goes with the speed, when it sail with the speed, it can go to the speed of 28 to 8 nautical miles per hour, 28 knots. Then you have a endurance 7,500 nautical miles. That means it can go for 29, this one 7,500 nautical miles. 7,500 nautical miles, it can remain on the water. That it can travel 7,500 nautical miles on the sea. Another thing very important, this one, in height. Height is a 59 meter. Height is 59 meters, this one. This height from the sea, 59 meters.
width is 62 meters, and the length, I mentioned the length. What is the length here? This is the 262 meters. Length is 262 meters. Width is 62 meters, and height is how many meters? 59 meters. Right? And then you can see 40,000 tons weight capacity. Right? 45,000, 40,000 is given there. And again you can see here, fixed wing 34th fixed wing rotary aircraft, MiG-29 aircraft, Camo 31 early warning helicopters, American built MH-60, this MH-60R multi-duty helicopter MUH that we have taken from USA. Whereas the Camo and MiG and Camo for early warning also from Russia. So Camo and MiG both are Russian. And then industry built advanced light helicopters. Now you know Dhruv, advanced light helicopter by HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Again can plus Tejas, light combat aircraft Tejas, that also comes. So you can see this is part of it. I have not especially revealed yet what weapons equipment INS Vikrant will be there. Expected list based on earlier statement and weaponry on board compatible sized with INS Vikramaditya. इसमें क्या क्या हथियार होंगे, क्या क्या वेपन्स होंगे, वो नेवी ने अभी पूरा डिस्कस नहीं किया, बट वो कंपैटिबल होगा INS विक्रमादित्य के जो वेपन्स हैं, what INS Vikramaditya has got, that which we have purchased from Russia, similar to that weapon system will be there in the Vikrant, INS Vikrant. Right? So this is what I have covered, important security based development and technologies. Right? And I hope you all are able to understand this. ऐसे जो भी करंट अफेयर्स में, ऐसे जो भी न्यूज में आता है, सारे फैक्ट्स को, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है. You need to be going through all such areas properly. So I am taking this 5 days class. I've started from Monday onward, all this 5 days class to brief you about such kind of areas and the development. Right? Tomorrow again I will be meeting there. Right? Tomorrow again I will be coming to the same kind of session with new topics. Right? So IQRA IAS platform, here we are having this kind of a discussion. So please make sure that whatever topics I have covered so far, you are able to go through it, read it, revise it, go through all aspect for upcoming examination. और ये केवल यूपीएससी की बात नहीं है, बाकी जो भी एग्जाम आप देंगे, है ना, यूपीपीसीएस का एग्जाम का भी जब जो कहा गया, जो भी चीज आप देंगे सब में ये काम आएगा. राइट? तो मैंने इसीलिए सेशन को बाइलिंगुअल रखा है कि एवरी वन ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, ये चीज है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स जो मैंने भी डिस्कस किया है ना, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, फॉलो इट. राइट? तो मैं एक बार और मैं देखता हूं कि अगर कोई डाउट है तो आई कैन स्टिल गो थ्रू इट. अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे फिर से आप बता सकते हो. आई एम जस्ट लुकिंग इनटू दैट. अदरवाइज विल स्टॉप द सेशन एंड विल मीट नेक्स्ट सेशन with new topics. Right? Okay, I can see some of the things here. All right, all this, thank you everyone. फिर then motherland or death, Sai Lokesh, yes. Jatayu, then again Indian Naval Base, yes. Aditya Kumar, you are very right. Defense deal between Maldives and China, yes, very good. Pankaj Singh. Sai Lokesh, one who is master of the sea will be a master of the land. Excellent, excellent, Sai. Then Madan Mohan Vikrant, yes. Then again, yes, very right. Then Randhir Bahadur is there, yes, most welcome Randhir. Aditya Kumar, then from 1st April in Kanpur you will be taking the current affairs. See, I am taking current affairs right now, but when I will come on 1st of April in Kanpur, I will take the GS part of the science and technology. अभी ये प्लान हुआ है कि 5 दिन की जो क्लास है उसमें करंट एस्पेक्ट को कवर करना. This 5 days science and technology class which I am taking, the main intention is to cover the current aspect of science and technology. But when I will come to Kanpur, जब मैं कानपुर में आऊँगा IQRA IAS का ऑफलाइन क्लास लेने के लिए 1 अप्रैल से,
तो वहां मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को भी कवर करूंगा। हाँ, बट मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, जो भी चीज मैंने यहाँ पे कराया है, ये 5 सेशन में जो मैंने कराया है, वो चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं बाकी एरियाज को देखूंगा। आई विल गो टू अदर टॉपिक्स which is important from GS point of view, science and technology. I will be taking science and technology classes there in Kanpur from 1st April, and I'll cover all the basic fundamental areas connected with current affairs. It has to always link with current affairs. Current affairs के साथ मैं लिंक करके चीज़ों को बताता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो वहाँ ये सब चीज़ें जो मैंने डिस्कस किया है ये सारे सेशन में, वो तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर यूट्यूब में और बाकी चीज़ों हो गया। मैं बाकी टॉपिक्स पे मैं आऊँगा। तो 1st अप्रैल टू वहाँ पर 7th अप्रैल कानपुर में मेरी क्लास है, एंड देन पुणे सेंटर ऑफ इकरा IAS आई विल टेक क्लास फ्रॉम 8th अप्रैल। 8th अप्रैल से 15 अप्रैल तक, 8th to 15th अप्रैल I will be in Pune for the Pune Science and Technology classes, right? So here I am trying to cover current dimensions, और ये इसलिए मैंने कराया क्योंकि 17th को है ना, 17th मार्च को UPPCS का परीक्षा होना था, जो कि अब पोस्टपोन हो चुका है, राइट? सो this 5 classes for current science and technology were decided because looking into the part of upcoming 17th March UPPCS एग्जाम, यूपी का जो एग्जाम होना था, लेकिन अब वो पोस्टपोन हो चुका है। तो सिंस हम लोगों ने पहले से प्लान कर रखा था कि ये 5 क्लास करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ। ठीक, अर्लियर इट वाज ऑल डिसाइडेड दैट दिस 5 classes for current science and technology, so that all of you who are going to appear in UPPCS exam on 17th of March will be comfortable to solve questions. But then unfortunately 17th March का परीक्षा टल गया। that the exam date has been now postponed. So anyway, even now I am covering all this kind of topics will definitely help you when UPPCS exam will be held in the later date. बाद के जो डेट में जब उसका UPPCS परीक्षा होगा तो वहां भी आपको हेल्प करेगा, है ना। एक और चीज है, 17 मार्च JPSC का परीक्षा है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, right? Those who are going to appear in JPSC exam, again all these topics which I have covered from current science and technology will be very important for JPSC exam also, right? तो वो चीज है। And at the same time UPSC exam, UPSC prelims exam, again all these topics are very important. जो 5 days classes on science and technology, all these are again important for prelims UPSC exam, right? So that part is there. So that's what is there. And UPSC का हिंदी माध्यम वाला बैच लाएं, वो आप मैनेजमेंट को पुटअप कीजिए। तो जो हिंदी का वो हिंदी में रहेगा, जो इंग्लिश का इंग्लिश में। यहाँ ये सेशन बाइलिंगुअल है, तो मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दैट पार्ट यू हैव टू टॉक टू द मैनेजमेंट, इकरा IAS मैनेजमेंट, है ना। उसके लिए आपको इकरा IAS के मैनेजमेंट को हिंदी के लिए आप बात कीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक ये जो भी मैंने अभी मोबाइल फोन में मैसेज में देख रहा हूँ, तो आई थिंक वी कैन नाउ एंड द सेशन, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन with more new current aspect science and technology topics. So stay tuned, right? आप 8 बजे मिलिए, ये सारे सेशन कीजिए, एंड लाइव में आप आके इंटरेक्ट कीजिए। आप दोस्त बाद में जो रिकॉर्डेड वीडियोस आप जो देख रहे होंगे अभी इस टाइम पे, तो उस टाइम पे फिर वो तो हो चुका है, लेकिन आप कम से कम टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किया है दैट विल हेल्प यू आउट। सो आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू मेनी टॉपिक्स, so we can stop this. So I am very glad to see you all right now, and I thank IQRA IAS at the same time all of you to be present here. All right, so we will meet soon in the next session. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, good night, take care, bye bye.